empowering humanity. So first of all, Happy Women's Day to all. Today we are celebrating the International Women's Day. So International Women's Day is celebrated every year globally on 8th of March. It sheds light
on the great achievements of women in various fields, in social, in economic, in political, in all fields. So empowering women is a great responsibility at present 21st century. It is necessary for gender equality and social dignity too. International Women's Day is not something new. It is celebrated from last decades. It was first celebrated in United States in 1909. Right? And the more private struggle waged every day by women, they have made the celebration of this day so possible. So each year, there is a theme associated with International Women's Day, and this year too, a very beautiful theme with a special and deep meaning has been formulated. Imagine a gender equal world, a world free of biases, stereotype and discrimination, a world that is diverse and inclusive too, a world where differences valued and are celebrated. So, the theme of International Women's Day 2022 campaign is Break the Bias. So, individually we all are responsible for our actions on every day and on all days. So that we can break the bias in our communities, we can break the bias in our workplace, we can break the bias in our schools, in our colleges and in our universities. At the end, together we all can break the bias on this Women's Day and beyond this also. Also, if you don't know, there is a color associated with this special day. The purple, green and white color are the color signifies this special day, International Women's Day. The purple signifies the justice and dignity of women. Green symbolizes the hope for the great future. And white presents the purity of a woman. The United States has also issued a theme for International Women's Day 2022 is Gender Equality Today for a Sustainable Future or Sustainable Tomorrow. Recognizing the theme was selected to recognize the contribution of women and girls around the world who are leading the charge on climate change, adaptation, mitigation and response to build a more sustainable future for all. The issue of climate change and lasting impact in our environment, economic and social development. So those who are among the most vulnerable and marginalized experience the deepest impact on them. Women are increasingly being recognized as more vulnerable to climate change impact than men, as they contribute the majority of the world's poor and are more dependent on. They are involved in the sustainability initiative around the world and their participation and leadership results in more effective climate action. So at last, I want to share a few lines regarding this. Why boys goes for blue and girls choose pink? There is also category for toys, dolls for girls and car for boys. Well, this is all fine. As why he goes out for work and kitchen is her destination, her only work. Why dolly for her as if she is a thing and he behaves like her owner, her king. Why adjustments for her and satisfaction for him? Why brightness for him? Her life goes so dim. Yes,
celebration is common in both. Hers for marriages and his for career growth. While she leaves her family, her home, while he stays there in his kingdom, his dome. She wants equity, not equality, to live. No sympathy, just love and respect to give. Don't call her weak. She is brave. While he can take his decisions, freedom, what she craves. Her emotions is caged. While roads are open for him and she is caged. Thank you so much. BSc second year and the main part of BSc first year. Highlight women's achievement and promote growth and gender equality. Women play an important role in our society as well as in the importance of women in the world. In 21st century, in the world, slowly moving towards gender equality for both man and woman, which could including equal pay scale, social status, and equal voting rights for women. This change is a necessity. It is required around the world because we are humans and equal opportunity and respect should be given everyone. In this COVID-19 pandemic, also we see that women working at many places like doctor, nurse, last but not the least police force. Women are also a source of inspiration for the family and society. There are many inspiring women like Indira Gandhi, Kalpana Chawla, Sania Mirza, etc. in their own rights. Women is an amazing opportunity to remind ourselves that fighting for our ladies is a very important thing to do. Support every woman and around us and respect everything they do because they deserve it. Thank you and have a nice day. Happy Women's Day. There just cannot be a day to celebrate a women. Every day should be a day where we respect the divinity of women. Hillary Clinton once said, "We share a common future and we are here to find a common ground so that we may help bring new dignity and respect to women and girls all over the world." The story of women from protesting on the streets to celebrating International Women's Day was not an easy one. The storylines of movies have changed from Prince Charming saving Cinderella to Elsa saving her own sister. The concept of women empowerment is being respected in every aspect. Encouraging, supporting and equipping women to face challenges and taking independent decisions in every aspect of life is called women empowerment. It is a transition from being timid and history is the evidence that proves women like Rani Lakshmibai, Razia Sultan, Sarojini Naidu were more superior to men in terms of combat and excellence. 21st century women like Malala Yousafzai, Oprah Winfrey have overcome the barriers of society themselves. They achieved great laurels and conveyed a strong message through their inspiring stories. Giving priority to women is not an option but a necessity. Their sense of femininity should not fade into oblivion but should linger in every person's mind. To epitomize, I would like to extend my regards to everyone present here for taking forward a step to bring a change. So here's to all the strong women. May we know them, may we be them, and may we raise them. Thank you. Your Excellency, Honorable Principal Ma'am, teachers and my dear friends, good morning to all of you. It is a great pleasure to talk about today's International Women's Day. So first of all, Happy Women's Day to all of you. Gender equality today for a sustainable tomorrow in recognition and celebration of the women and girls who are leading the charge on climate. It is not a secret that women are our future from now on, with along the men in society as well. And the history of all this month over the globe is where International Women's Day commemorates the cultural, political, socio-economic achievements of the women. The day marks a call to a gender-equal world, free of biasness, stereotypes and discrimination, and one what is diverse, equitable, inclusive, while differences are valued and celebrated. There are various rights that are given to the women from our society, from our community. So here would I like to talk about those rights. First of all, the first right is right to equal pay. At each and every society and each and every wages are given to the women nowadays.
and right to dignity and decency. Third one is right against workplace harassment, whether it is physical, mental or sexual harassment. Right against domestic violence, right to free legal aid, and right to not to be arrested after a sunset. That is one of the main right that is given by the Indian constituencies to all the women that are living in India. Next is right against being stalked. Right against indecent representation. Indecent representation in case if a woman is having any kind of harassment, after that woman can't explain all the things verbally. So if we have to present the statement of the woman, we have to provide to the even the judges while in a written form to prevent any kind of indecent representation. Right to register virtual complaints, right to zero first information report, right to keep their identity anonymous in case of self-statement, and entitled to free aid while having any kind of sexual assault. Women can't be called to the police stations, and the next things that I would like, like any other human being, she must be valued by virtue of her merits and character, not by her personal appearances. Next, the inner and strength that each girl has, shortened to believe respected and valued. If we are going to celebrate Women's Day, so let's celebrate it with respect and with dignity, with love and belief, and by providing confidence, encouragement and moral support when needed to all the women. Apart from this, I personally believe that today women are given umpteen opportunities regarding their education, regarding their socio-economic development. Besides this, the women should be thankful for this equity to all the people who are supporting them, and they should know that the rights of each and every woman are come with various responsibilities. So if we are talking about the rights, we should talk about responsibilities as well. And we should use that rights to provide a great strength to our country, to our community. We shouldn't use that rights as a misuse of our rights as a gender. We shouldn't use our gender as an excuse. Use that as your strength, and then to give thumbs and ups to all the community and all the people that are serving us for this equity. Thanks to all. Happy Women's Day. Now we are inviting the students for poems. Names are Pradeep Singh of GNM third year, Priya of BSc third year, Arshdeep Singh of GNM third year, Ekam of GNM first year, Priya of GNM first year, Sukhmanpreet of GNM first year, Manpreet Kaur of GNM first year, Gagandeep Kaur of ANM first year, Gurkomal Kaur of BSc first year, and Ameet Kaur of BSc first year. First of all, welcome to the today function. Happy International Women's Day to everyone. So basically, मैं point present कर रहा था. ये जो point है एक mother वालों अपनी daughter को लिखी गई है. Okay, like अपनी माँ जो अपनी बेटी. एक मेरी दुआ जो आज पूरी हो गई. परियां बढ़कर रूपना अधूरी हो गई. सुपने ख्यालां च ना देखी जो कदे. सुपने ख्यालां च ना देखी सी जो कदे. उस जिंदगी नाल आज मुलाकात हो गई. उस जिंदगी नाल आज मुलाकात हो गई. तेरी अखां दी नूर नूं रब करे. तेरी अखां दी नूर नूं रब करे. रब करे ऐसी नूरानी चमक मिल जावे. जो जावां वारियां सुपने होण साकार तेरे तू भरे उडारियां. सुपने होण साकार तू भरे उडारियां. ए डोर कुदरत है जो तेरे नाल है सींचदी. ए डोर कुदरत है जो तेरे नाल है सींचदी. सामने दिसे तू मैं जब भी अखां मीचदी. हारियां मैं सब ते तो हारियां. सुपने होण साकार तू भरे उडारियां. जो मिठी जेही पवन है ते सारा ये सावन है. जो मिठी पवन है ते सारा ये सावन है. ये सब तेरी ही मुस्कान वर्गी. प्यारियां प्यारियां मैनू ये लगन प्यारियां. खाबा दे देस तू भरे उडारियां. अशकां दियां रमज़ां ना समझ आउंदियां. अशकां दियां रमज़ां ना समझ आउंदियां. बागां विच कलियां नित गल्लां पाउंदियां. अशकां दियां रमज़ां ना समझ आउंदियां. बागां विच कलियां नित गल्लां पाउंदियां. मोतियां दियां गानी ना जो सजाउंदियां. महकां ने कुदरत विच जो मिलाउंदियां. जापण मैनू तेरियां ही उसारियां. तेरियां ही उसारियां. खाबां दे देस तू भरे उडारियां. तेरे कोल बहना तेरे कोल होना.
तेरे कोल बहना तेरे कोल होना त्योहार सा लगता है। ये जमाना आजकल सारा परिवार सा लगता है। तेरे कोल बहना तेरा कोल होना त्योहार सा लगता है। ये सारा जमाना आजकल परिवार सा लगता है। तेरे नाल ही ईद ते तेरे नाल ही दिवालियां, तेरे नाल ही ईद ते तेरे नाल ही दिवालियां। तू खाबा दे देश रवे ते तू बड़े उड़ारियां। थैंक यू विद्यार्थी आज महिला दिवस से ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ कविता के रूप में शब्द साझे करने जा रही हैं जो कि बलवंत मुखर्जी द्वारा लिखी हुई एक कविता है। बस हुण होर ना डरनी पैने, उठ लड़ाइयां लड़नी पैने, अपने लिए भी जीना सीख लै, जिउंदे जीना मरनी पैने। बड़ी पति दी काली पूजा हुण जमाना आ गया दूजा, बेचारी दा तकमा ला दे, हथ विच चंडी फड़नी पैने, अपने लिए भी जीना सीख लै, जिउंदे जीना मरनी पैने। दुनिया दल कम बोलना, बेले रह के कुफर तोड़ना, जेल बना के करनी पैने, अपने लिए भी जीना सीख लै, जिउंदे जीना मरनी पैने। अद्धी होई आबादी तेरी, ताले विच आजादी तेरी, तोड़न लई हिम्मत दा घोड़ा, नीडर होके पढ़नी पैने, अपने लिए भी जीना सीख लै, जिउंदे जीना मरनी पैने। उच्चे लंबे पाके चोले, बाबियां लेके फिरदे टोले, पीड़ा विच नजर घुमाउंदे, अखां नूं मैली करनी पैने, अपने लिए भी जीना सीख लै, जिउंदे जीना मरनी पैने। पहला खूब पढ़ाइयां कर लै, समझां विच तलीमा कर लै, बलवंत भी तेनू सिर झुकावे, बन के आ अफसर दी पैने, अपने लिए भी जीना सीख लै, जिउंदे जीना मरनी पैने। बस हुण होर ना डर पैने, उठ लड़ाइयां लड़नी पैने, अपने लिए भी जीना सीख लै, जिउंदे जीना मरनी पैने, जिउंदे जीना मरनी पैने। God, respected principal ma'am, dear teachers and all the students. Today, I, Komal Kaur, is standing in front of you all to convey a beautiful message through my poem. Title of my poem is Chase Dreams, Not Doubts. A cute, sweet young lady strolling at beachside, thinking deeply about the motive of her life, fighting with her intimidating thoughts in the midst of night, wondering how stars shine without knowing what's for their right. Gazing at the shining stars, mumbling restlessly about her fate, asking herself repeatedly, will she be allowed to enter the house this late? Dad said, stop the work. Mom said to behave, dreams breathing at the edge of knife because freedom is all what she craves. She started questioning the stars one by one. Is my passion something to be laughed at? Questioning my abilities, lowering my self-esteem, ordering me to bend in my goals and also calling me queen. Given the title self-centered while chasing the dreams, make me cringe, urge to cry and scream. Angelic star felt empathy and wanna appreciate her, so decided to ride down to earth. Girl adored the broken star and prayed for bliss. Took a deep breath and scribbled something on it by quick line. Promised to believe herself, always, forever and lifetime. Thank you. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਇੰਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਚੁੱਪ ਹੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਇਹ ਬੋਲਣ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਚੁੱਪ ਹੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਇਹ ਬੋਲਣ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਇਹ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ ਕਰਨ ਇਹ ਇਜ਼ਹਾਰ ਇਹ ਹਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ ਇਹ ਮੁੱਢ ਵਿਸਾਰ। ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲ ਇਹ ਡੋਲਣ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਚੁੱਪ ਹੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਇਹ ਬੋਲਣ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਚੁੱਪ ਹੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਇਹ ਬੋਲਣ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ। ਜੋ ਰੁਤਬਾ ਰੱਬਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੁਤਬਾ ਰੱਬਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਔਰਤ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਖਿਆਲ ਵੀ ਸਮਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੋਲ ਤੇ ਹੱਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਬੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਬੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਇਹ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ। ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਬੰਦ ਚਚੋਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਜਿੰਦਰਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜਚੋਲਣ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਚੁੱਪ ਹੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਇਹ ਬੋਲਣ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ।
ਇਹ ਚੁੱਪ ਹੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਇਹ ਬੋਲਣ ਕੀ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਨਸਲਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਜਦ ਔਰਤ ਸਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਔਰਤ ਸਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਜੁਮਲਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਔਰਤ ਹੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਜੁਮਲਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਔਰਤ ਹੀ ਬਦਲਦੀ। ਥੈਂਕਸ। ਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨ ਸਮੇਟ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੌਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂੰਜ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੌਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂੰਜ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵੀ ਹਾਂ। जिस दर पे देवते झुकते हैं, जिस दर पे देवते झुकते हैं, मैं ममता की दरगाह भी हाँ, मैं ममता की दरगाह भी हाँ। मैं लक्ष्मी दी चंकार दे विच, मैं लक्ष्मी दी चंकार दे विच, मैं सस्सी वर्गा प्यार भी हाँ, मैं सस्सी वर्गा प्यार भी हाँ। मैं गुदते बज्जी रखड़ी हाँ, मैं गुदते बज्जी रखड़ी हाँ। मैं पूरी दुनिया तो बड़ी शांत भी हाँ, मैं तरजी जही शांत हाँ। मैं कवियां दा विकांत हाँ, मैं कवियां दा विकांत हाँ। मैं मत्थे लगा टिक्का भी हाँ, मैं मत्थे लगा टिक्का भी हाँ। ते प्यो दे सिर दी पग भी हाँ, ते प्यो दे सिर दी पग भी हाँ। मां दी मैं लाडली जाई हाँ, मां दी मैं लाडली जाई हाँ। ढोले दे हथ दा नक भी हाँ, ढोले दे हथ दा नक भी हाँ। मैं कल्पना दी उड़ान दे विच, मैं कल्पना दी उड़ान दे विच, जल थल ते आसमान दे विच मैं मोती सितारे लाए हुए हैं। जल थल ते आसमान दे विच मैं मोती तारे लाए हुए हैं। कितने ही बाने पाए हुए हैं, कितने ही बाने पाए हुए हैं। मैं रणचंडी ते मरियम भी, मैं रणचंडी ते मरियम भी। मैं नूरा सीता विलियम सा, मैं नूरा सीता विलियम सा। मैं किसी दी घर दी लाज भी हाँ, मैं किसी दे घर दी लाज भी हाँ। मैं लोक भी हाँ, मैं समाज भी हाँ, मैं लोक भी हाँ, मैं समाज भी हाँ। मैं तो ये जग चलता है, मैं तो ये जग चलता है। सब मेरी कुख विच पलदा है, सब मेरी कुख विच पलदा है। मैं तो ये जग चलता है। विच गृहस्थी दफ्तेदार मैं सांझी हिस्सेदार भी हाँ, विच गृहस्थी दफ्तर मैं सांझी हिस्सेदार भी हाँ। इंदियां मैं मल्ला मारियां ने, इंदियां मैं मल्ला मारियां हैं। फिर भी मैं बाबा दे सिर दा भारी हाँ, फिर भी मैं बाबा दे सिर दा भारी हाँ। मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहती, मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहती। बस होंद मेरी नू स्वीकार करो, बस होंद मेरी नू स्वीकार करो। मैं इज्जत मान दी भुखी हाँ, मैं इज्जत मान दी भुखी हाँ। कुछ मान दो सत्कार करो, कुछ मान दो सत्कार करो। कंजक मान के जो पूजते ने, कंजक मान के जो पूजते हैं, उन्होंने यही कहना चाहती हाँ, मैं सच्ची जिउना चाहती हाँ, मैं सच्ची जिउना चाहती हाँ, मैं सच्ची जिउना चाहती हाँ। Hello, good morning to all of you, dear teachers, principals, and all of us. मैं प्रिया कुमारी आज आपके सामने वुमेन्स डे के शुभ अवसर पर आप सबके सामने एक कविता पेश करना चाहती हूँ। मेरा कविता का शुरू है। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। अपने को कमजोर न समझो, अपने को कमजोर न समझो। जननी हो संपूर्ण जगत की, जननी हो संपूर्ण। गौरव हो अपनी संस्कृति की, आहट हो स्वर्णिम आगत की। तुम्हें नया इतिहास देश का अपने कर्मों से रचना है। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आया समय तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। थैंक यू टू ऑल, हैप्पी वुमेन्स डे। मेरा नाम सुखप्रीत कौर है, जेएलएफ फर्स्ट ईयर की विद्यार्थी हूं। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। मैं औरत दी की सिफत करा, इंसान खुद औरत दा जाया है। मैं मां बड़ी दे रूप चों हर बार ही रब नूं पाया है, हर बार ही रब नूं पाया
वजूद बुलाकर हर किरदार निभाती है। ये वो देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है। ये वो देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है। Good morning, respected principal ma'am, teachers and all my dear friends. Today we all have gathered to here to celebrate International Women's Day. First of all, I would like to wish a happy Women's Day to all beautiful and courageous women are present at here. दिलों में बस जाए वो मोहब्बत हूँ, दिलों में बस जाए वो मोहब्बत हूँ, कभी बहन कभी ममता की मूरत हूँ। मेरे आंचल में से है चांद सितारे, मेरे आंचल में से है चांद सितारे, माँ के कदमों में बसी एक जन्नत हूँ। हर दर्द जो गम में छुपा लिए, हर दर्द जो गम में छुपा लिया सीने में, लबों पे ना आए कभी वो हसरत हूँ। मेरे होने से ही है ये कायनात जवान, जिंदगी की बेहद हंसी हकीकत हूँ। मेरे होने से ही है ये कायनात जवान, जिंदगी की बेहद हंसी हकीकत हूँ। हर रूप में हर रंग में डलकर संवर जाऊं, हर रूप में हर रंग में डलकर संवर जाऊं, सब्र की मिसाल हर रिश्ते की ताकत हूँ। अपने हौसले से तकदीर को बदल दूं, सुन ले ये दुनिया, हाँ मैं एक औरत हूँ, हाँ मैं एक औरत हूँ। Thank you so much all of you and happy In third year for her dance performance. A very warm welcome and very warm good morning to all of you and all the women folk existed in the world over. Today is the day dedicated to all those women's achievements either in the social sector or in the economic or politics, academic research, anywhere. The women are untapped achievers. They are untapped asset of the world. And the day which is going to be celebrated world over is a highly significant today. We salute to all women for their achievements in various spheres of their life. And the example is very much in the venue. The students have given their expressions, their views, beautiful way. They have presented themselves, their potentials they have shown. If we talk about the women, the light stars, the women which are working adjacent to our venue, the women in the labor force and till the sky, Kalpana Chawla. The women who work on the roadside as a stone crusher and the women going to fly over the sky, women in the politics like IPS officer, First Lady, Kiran Bedi and Kalpana Chawla and many more women in every sphere of life. I think the biggest example in the country, the lady is going to manage the finance department of the country, that is Sita Raghunan. And many more women are exemplary
if we talk about Punjab and all over India, I think there is a huge list and innumerable names which are going to contribute the progress and development of the country in various spheres. And on behalf of you people, when we talk about COVID-19, these are the girls, these are the frontline workers, maybe in the form of police, maybe in the form of nurses, in the form of doctors, in the form of any force in the women folk. They came front to fight against the COVID and to save the humanity. Huge applaud of clap, I think, should be there for you people. Women in our setup are not less than anybody. The way they should be respected right from the home. It's the home. There are two words. One is home, one is house. And house becomes home when women are there. No home can be home without the existence of women. So clap for you people. I think your teachers, you people, your mothers, your sisters, your grandma, your grandpa, your grannies they are all, they deserve a lot of appreciation for the work they are doing for us, everybody. They are the one, they are managing at home, they are managing with the public, they are managing with the neighborhood, with the social obligations, with every kind of obligations they are managing. And they are the people, they are unsung, they are untapped, they are invisible. And we people, we each of us should make respect to everyone, every female. It's the female to give respect to female. I think there is no problem with the gents. They are giving respect to us, but it's the problem of female which going to create boundaries for the female. And if we talk about the dignity of the female, they are the one person padda. But when we make literate the female, the generations pad jati hain. और सोतियों बंदा आखिए जी चमे राजा सबने इज्जत गुरुआ ने बख्शी है गुरुआ ने बीबी नाम की तो लैके ते आज तक सब इज्जत इन्नी बख्शी है चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ डॉटर इन द फॉर्म ऑफ सिस्टर इन द फॉर्म ऑफ मदर देवी देवतियां दे कंट्री दे विच अगर सानू इज्जत नहीं मिलती ਅਸੀਂ फील नहीं करते या सानू डिप्राइव ऑफ है ते किते ना किते कोई बाउंड्रीज जरूर है जिन्हां नु सानू द थीम इज वेरी मच क्लियर ब्रेक द बाइस घर तो ब्रेक होएगी ते नेबरहुड तो ब्रेक होएगी तारे कॉलोनी तो ब्रेक होएगी सारी सोशल सेटअप तो ब्रेक आएगी सारे पॉलिटिक्स के सिस्टम तो सारे वर्क प्लेस तो ब्रेक होएगी इन विच एरिया वी एग्जिस्ट ब्रेक सब करना पड़ेगा बाइस को और वो बाइस को ब्रेक करेगा वी ऑल आर यू पीपल यू ऑल ਜਿਹੜਾ दिन शुरू होया सी बड़ी ऑपरेशन सी होगी बड़िया डिफिकल्टीज फेस करके सानू ये आज़ादी मिली है असं इक्वलिटी मंग रहे हैं और जिन्होंने लोगों ने ये ऑपरेशंस बियर किए हैं जिन्होंने ये प्रॉब्लम्स बियर की राइट फ्रॉम द अर्ली 20th century इफ वी गो बैक द हिस्ट्री अर्ली 20th century जो सारी जनरेशन शुरू हुई सी फीमेल फोक की they faced lot many challenges एंड जो कहते ना कोई चीज़ की आदत हो जाती है तो फिर उदों उदों कोई चुप नहीं रहता उदों रेगुलेशन आता ही आता उदों चैलेंजेस फेस करने का एंड हो जाता सो उस टाइम के लिए वीमन सी वो वर्क करदियां सी और उन्होंने वर्किंग आवर बहुत ज़्यादा सी उन्होंने वर्किंग आवर के हिसाब नाल वेजेस नहीं सी उस टाइम ते उन्होंने रेवोल्यूशन शुरू किया इट्स अर्ली 20th century 1908 जो उन्होंने शिकागो के विच लोगों ने न्यूयॉर्क के विच एक लंबी चैलेंज आया 15,000 के अराउंड में भी मोर वीमेन ने एक रैली किया और कैंपेनिंग की जिन्हें उन्होंने डिमांड सीगा वर्क फोर्स के वास्ते कि उन्होंने वर्किंग आवर्स घट होने चाहिए दे हैव टू हैव ए राइट फॉर द वोट ऑल्सो एंड उन्होंने वेजेस इक्वल होने चाहिए रादर बेटर होने चाहिए सो ये थोड़िया बहुत मोटिया एग्जाम्पल से जिन्होंने लिए उन्होंने फाइट किया और उन्होंने ये इन्ना स्ट्रगल करके अपने आप को दे वन द वॉर And 1911 to like 1913 the day we are going to celebrate today, this is the International Women's Day started that time also. जिस दिन उस दुनिया भर में ऐसे मना रहे हैं और इधर शिकागो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस होया सी उस तो बाद ये डेनमार्क के कोपेनहेगन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ सेकंड कॉन्फ्रेंस
ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਤਿੰਦਰ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਬਨ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਲਰ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦਾ ਵਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਗਨਿਟੀ। ਔਰ ਉਹ ਸਿੰਬਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਲਈ। ਐਂਡ ਹੋਪ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਵੀ ਮਸਟ ਬੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਐਵਰੀਬਡੀ। ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਆਰ ਟੂ ਬੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਅਲੌਟ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਹੋਪ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਓਵਰ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਟੂ ਮੇਕ ਯੂ ਕਲੀਅਰ ਐਵਰੀਬਡੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਲੋਗਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਲੋਗਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਸਟੇਨ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਫॉर ਟੁਮਾਰੋ। और किमें सस्टेन होगी अगर ਅਸੀਂ वैल्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ट्रेडिशन है, जो साਡਾ कल्चर है, ਉਹਨੂੰ प्रिजर्व करिए, अपने एल्डर्स ਨੂੰ रिस्पेक्ट करिए और लव एवरीबॉडी विदाउट क्रिएटिंग एनी बाउंड्री, एनी बायस ऑफ द कास्ट, रिलीजन, मॉनिटरी, इकोनॉमिक और सोशल और kind of any political boundaries to put के ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ live and let live ਦੀ feeling ਪਈਏ। और ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰੀਏ। Upliftment and empowerment ਸਾਡੇ ਸਭ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਿੰਗਲ ਮੈਨਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਨੋ ਬਾਇਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦੇਅਰ। ਬਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੈਂਡਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪੀਪਲ ਫਿਟੀਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੋ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਬਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਬਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਸਰਪਾਸ ਕਰਦੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੱਡੀ ਲੈ ਲਓ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰ ਲਓ, ਟੈਨਿਸ ਕਰ ਲਓ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਨੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਲੈਟ ਹਰ ਬੀ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਮਦਰਸ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਜੀਸਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਜਨਨੀ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਅਪਲਿਫਟਮੈਂਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਲਈ let's be together to help each one of us। and ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਐਫਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਰੀडम ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਜੋ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਟ ਕਰੀਏ। जो मैं कहना चाहती हूँ कि आज कोई भी कुड़ी इस तरीके ना बने कि उनको एक्सप्लोइटेशन हो जाए तो चुप रह जाए, वो अपनी वॉइस रेज करे। जगह जगह तो सबको सपोर्ट सिस्टम है, सबको डिफेंस है, सबको सांझ केंद्र है, सबको कई तरह की NGOs है। kindly raise your voice wherever you are exploited, wherever you are disappointed, wherever you are harassed. Raise your voice and be forward and live your life happily. All the best on the very special occasion of the International Women's Day. Thank you very much.